हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस इंग्लिश लिटरेचर की जो एक लॉन्ग हिस्ट्री है इसको मैंने ब्रीफली कंपोज किया है और इस जो ये जो पीडीएफ फाइल है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड किया है, वहाँ से आप ये फाइल इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मज़ीद ये कि अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फॉर कन्वीनियंस of discussion, historians divided the continuity of English literature into segments of time that are called period. इसको आसानी के लिए इसकी डिस्कशन को आसानी के लिए जो तारीख दान है उन्होंने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है जिनको पीरियड का नाम दिया गया है, दौर अदवार यानी कि the exact numbers, dates and name of these periods vary, but the list conforms to widespread practice. The list is followed by a brief comment on each period in chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि तारीख की तरतीब से इन टाइम पीरियड्स को डिस्कस किया गया है। तो चलते हैं टाइम पीरियड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ 450,066. The name of this period is the Old English or the Anglo-Saxon period. Number 2, from 1066 to 1500, this period is named as the Middle English period. In this period, there are two devised more periods included: the Anglo-Norman period from 1066 to 1340, and the next is the age of Chaucer 1340 to 1400. Number 3, 1500 to 1660. This period is named as the Renaissance period. In this, there are more four categories involved. Number 1 is Elizabethan age from 1558 to 1603. Number 2nd is Jacobean age from 1603 to 1625. Number 3 is Caroline age 1625 to 1649. And number 4 is Commonwealth period, Puritan 1649 to 1660. So टाइम पीरियड्स में नंबर 4 पे है 1660 टू 1785। इसमें द न्यू क्लासिकल पीरियड आता है। न्यू क्लासिकल पीरियड में मज़ीद 3 दौर हैं। रेस्टोरेशन पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700, ऑगस्टन एज ऑफ पॉप 1700 to 1745. Number 3 is age of sensibility. It's often called as age of Johnson 1745 to 1785. So number 5th period is 1785 AD to 1832 AD. It's called the Romantic period. Number 6 is 1832 to 1901, the Victorian period. इसमें मज़ीद 2 पीरियड्स अकर करते हैं, द प्री रेफेलिट्स 1848 to 1860 and the aestheticism and decadence 1880 to 1901. So number 7 period is 1901 to 1939. It's called as the modern period. इसमें मज़ीद 2 पीरियड आते हैं, द एडवर्डियन पीरियड 1901 to 1910 and the Georgian period 1910 to 1936. The last one is 1939 to as on the existing time as till now. The this period is named as the post-modern period. So 450 450 to 1939, इसमें टोटल हिस्टोरियन ने 8 पीरियड्स को डिवाइड किया है इस दौर को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ, इन पीरियड्स की डिटेल की तरफ। द इम्पोर्टेंट शॉर्ट डिटेल्स ऑफ दिस पीरियड्स इज मेंशन्ड इन द बिलो लाइन्स। सो नंबर 1 इज
we have already read it, Old English or Anglo-Saxon period, 450 to 1066. The term Anglo-Saxon comes from two Germanic tribes, the Angles and Saxons. मतलब कि एंग्लो सैक्सन जो टर्म है ये दो जर्मनी के कबाइल से निकली है, द एंगल्स और द सैक्सन्स. This period of literature dates back to their invasion along with the Jutes of Celtic England. का जो इन्वेजन था उन्होंने सेल्टिक इंग्लैंड पे किया. इन सिरका सिरका कहते हैं टाइम पीरियड को, जैसे AD और BC, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी 450. The era ends in 1066 when Norman France under William conquered England. ये जो इरा है, ये पीरियड जो है, ये 1066 में एंड होता है जब किंग विलियम इंग्लैंड को फतह करता है. The much of the first half of this period prior to the 7th century at least had oral literature. इसके जो पहले हाफ सदी का जो पीरियड है उसमें ओरल लिटरेचर बयान किया गया, पेश किया गया है. A lot of prose during this time was translation of something else or otherwise legal, medical or religious in nature. However, some words such as Beowulf and those by period poets Cadman and Cinewolf are important. इस पीरियड में जो एक इम्पोर्टेंट Beowulf है, ओल्ड हिस्टोरियन जो पोइट्री की एक एपिक पोइम है, उसको बयान किया गया है. Beowulf is the first important work of literature in English. It is the longest epic poem in Old English. So next is the Middle English period. The Middle English period sees a huge transition in the language, culture and lifestyle of England and results in what we can recognize today as a form of modern recognizable English. So the era extends to around 1500. Middle English era extends to around 1500. As with the Old English period, much of the Middle English writings were religious in nature. Middle English की जो writings थी वो मजहबी थी. However, from about 1350 onward, 1350 से आगे secular literature began to rise. 1350 के आगे इसमें मिडल इंग्लिश में सेकुलर लिटरेचर जाके उभरता है. द पीरियड इज होम टू द लाइक्स ऑफ चौसर. इस पीरियड में इंपॉर्टेंट फिलोसफर चौसर, थॉमस मेलोरी एंड रॉबर्ट हेनरीसन आते हैं. नोटेबल वर्ड्स include Piers Plowman and Sir Gawain and the Green Knights. Sir Gawain and the Green Knights is a late 14th century chivalric romance in Middle English. Number third is the Renaissance from 1500 to 1600. Recently, critics and literacy historians have began to call this the early modern period. इसको early modern period भी कहा है critics ने. But here we retain the historically familiar term Renaissance. लेकिन इसको हम Renaissance ही कहेंगे यहाँ पे. This period is often subdivided into 4 parts. रेनेसेंस को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है. एलिजाबेथन एज 1558 to 1603, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज एंड नंबर 4th इज कॉमनवेल्थ एज. डिस्कस करते हैं एलिजाबेथन एज को. एलिजाबेथन एज वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा. इंग्लिश ड्रामा के लिए एलिजाबेथन एज जो था वो एक गोल्डन पीरियड था. सम ऑफ इट्स नोटवर्थी फिगर्स, इसके काबिल जिक्र जो फिगर्स हैं इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, सर वॉल्टर रैली एंड ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर. ये जो एक मैसिव राइटर्स हैं नोटवर्थी, इसमें गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा में आते हैं एलिजाबेथन एज में. Number second is Jacobean age. The Jacobean age is named for the reign of James I. James I के दौर में इसको नेम दिया गया है Jacobean. It includes the worlds of John Donne, Shakespeare, Michael Drayton, John Webster, Elizabeth Carey, Ben Jonson and Lady Mary Wroth.
द किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल ऑल्सो अपीयर ड्यूरिंग द जेकोबियन एज। किंग जेम्स की जो बाइबल की ट्रांसलेशन थी वो भी जेकोबियन एज में ही आती है। कैरोलिन एज, द कैरोलिन एज कवर्स द रेन ऑफ चार्ल्स वन। चार्ल्स वन के दौर में कैरोलिन एज आती है, जिसमें जो प्रोमिनेंट फिगर हैं जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन एंड जॉर्ज हर्बर्ट आर द नोटेबल फिगर। कॉमनवेल्थ एज है। फाइनली द कॉमनवेल्थ एज पीरियड वाज सो नेम्ड फॉर द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द सिविल वार। ये कॉमनवेल्थ जो पीरियड था ये एंड ऑफ सिविल वार था और द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की, स्टुअर्ट मोनार्की का रिस्टोरेशन था। एंड जो स्टुअर्ट मोनार्की थी वो स्टार्ट हुई थी 1649 में and last till 1774. This is the time when Oliver Cromwell, a Puritan, led parliament who ruled the nation. ओलिवर क्रोमवेल ने इसी एज में लेड करते हैं। एट दिस टाइम पब्लिक थिएटर्स वर क्लोज्ड। ओलिवर क्रोमवेल ने पब्लिक थिएटर्स इसमें बंद कर दिए थे। फॉर नियरली 2 डिकेड्स, 2 सदियों के लिए, टू प्रिवेंट पब्लिक असेंबली एंड टू कम्बैट मॉरल एंड रिलीजियस ट्रांसग्रेशंस। खिलाफ वर्जियाँ, लोगों की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया था। जॉन मिल्टन एंड थॉमस होब्स पॉलिटिकल राइटिंग्स अपीयर्ड, इसी में ही अपीयर करती हैं कॉमनवेल्थ में जॉन मिल्टन और थॉमस होब्स की पॉलिटिकल राइटिंग्स। वाइल ड्रामा सफर्ड प्रोज राइटर्स सच एज थॉमस फुलर, अब्राहम काउले एंड एंड्रयू मार्वल पब्लिश्ड प्रोफिकली। Number 4th period is Neoclassical period, from 1600 to 1785. It is a revival of the classic Greek. Neoclassical. The neoclassical period is also subdivided into ages. इसको भी तकसीम किया गया है 3 ages में। Restoration age, the Augustan and the age of sensibility. Restoration age क्या है? Restoration period sees some response to the puritanical age, especially in the theatre. Restoration comedies of manner developed during this time. इस restoration में comedies को develop किया गया है under the talent of playwrights like William Congreve and John Dryden के under. Satire too became quite popular. इसमें satire भी quite popular हुई है, as evidenced by the success of Samuel Butler. Other notable writers of the age include Ephra Behn, English playwright. She is English playwright. John Bunyan, John Locke, extras. The Augustan age 1700 to 1745. The Augustan age was the time of Alexander Pope and Jonathan Swift, who imitated those first Augustans and even drew parallels between themselves and the first set. ये टाइम ऑफ अलेक्जेंडर पॉप और जोनाथन स्विफ्ट में आता है ऑगस्टन एज। लेडी मैरी वॉल्टले मोंटेगो, अ पोएट, वॉज प्रोलिफिक एट दिस टाइम। इसमें जो अनमोल और मशहूर जो फिगर है वो लेडी मैरी वॉल्टले मोंटेगो हैं ऑगस्टन एज की। एंड डैनियल डेफोए वॉज ऑल्सो पॉपुलर इन द ऑगस्टन एज। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी समटाइम्स रेफर टू एज द एज ऑफ जॉनसन। इसको जॉनसन का एज भी कहा गया है क्योंकि सैमुअल जॉनसन इस एज में अकर करते हैं। was the time of philosophers like Edmund Burke, Edward Gibbon, Hester Lynch, Thrale, James Boswell and of course Samuel Johnson इसी एज में आते हैं। Next is romantic period. The beginning date for the romantic period is often debated. इसकी अक्सर ये डिबेट चलती रहती है कि इसका ये कब शुरू हुआ है बिगनिंग इसकी रोमांटिक पीरियड की। सम क्लेम के 1785 में 1785 में इमीडिएटली फॉलोइंग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के फ़ौरन बाद ही लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको शुरू किया गया है, ये शुरू हो गया था। कुछ कहते हैं कि 1789 विद द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया है। एंड स्टिल सम बिलीव दैट 1798 द पब्लिकेशन ईयर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज के लिरिकल जो बैलेड्स है इसके साथ ही ये पीरियड शुरू हुआ है। सो ये डिबेट चलती आ रही है। द टाइम पीरियड एंड्स विद द पैसेज ऑफ द रिफॉर्म बिल एंड विद द डेथ ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट की डेथ के साथ ही ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन ऑफ ऑल लिटरेसी एज इज़ द एज ऑफ रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो है वो सबसे पॉपुलर एज है
लिटरेचर में। दिस इरा इंक्लूड्स द वर्क ऑफ सच मैसिव्स एज, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेले वगैरह इसी एज में आते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ माइनर पीरियड, इसमें एक छोटा पीरियड भी है जिसको गोथिक पीरियड कहा गया है। Number 6 is Victorian period. This period is named for the reign of Queen Victoria, who ascended to the throne, जो 1837 में तख्त पे बैठी और last till 1901. It was a time of great social, religious, intellectual and economic issues. The period has often been divided into early, mid and late. ये जो period है विक्टोरियन एज, इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, अर्ली, मिड और लेट में, जिसमें प्री रेफेलिटीज़ एंड दैट ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस भी आते हैं। द विक्टोरियन पीरियड इज स्ट्रॉन्ग इन कंटेंशन, इसमें डिसएग्रीमेंट है। रोमांटिक पीरियड फॉर बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, विक्टोरियन एज वाले कहते हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर है और रोमांटिक वाले कहते हैं कि रोमांटिक ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि दोनों ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि दोनों में ही बड़े बड़े जो मैसिव फिगर्स हैं इंक्लूडेड हैं। मोस्ट पॉपुलर, इन्फ्लुएंशियल एंड प्रोलिफिक पीरियड इन ऑल इंग्लिश लिटरेचर। पोएट्स ऑफ दिस टाइम, इसमें आते हैं रॉबर्ट एंड ई.पी. ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोसेटी एंड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Next period is the modern period. Modern period between 1901 and 1939 is generally accepted as the modern age of English literature. Queen Victoria's death in 1901 marks the beginning. इसकी जो शुरुआत थी क्वीन विक्टोरिया की डेथ से हुई है 1901 से, and ends with the beginning of Second World War in 1939 के जो वर्ल्ड वार थी स्टार्ट हुई थी, उसके साथ ही मॉडर्न पीरियड ख़त्म हो जाता है। मॉडर्न पीरियड को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, द एडवर्डियन पीरियड और द जॉर्जियन पीरियड। द एडवर्डियन पीरियड is named for King Edward VII and covers the period between Victorian death and outbreak of World War I. Georgian period जो है वो the Georgian period usually refers to the reign of George V. It is the second phase of modern age. लोग कहते हैं कि ये सेकंड फेज है मॉडर्न एज का। The last one is the post modern period from 1939 to so on as till today. This period is also called as an age of contemporary, belonging to the present time tak. After 1939, the new trends in English literature came to light in the post modern period. ये थी आज की टॉपिक के रिलेटेड वीडियो। इस फाइल को जो मैंने कंपोज किया है, इसका मैंने लिंक पीडीएफ में अपलोड कर दी, उसमें डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ने से ज़्यादा इजीली बंदा समझ जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।